एग्रीकल्चर दो तरीके का हो सकता है। सबसिस्टेंस सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, जिसमें कोई सरप्लस नहीं बचेगा, आप अपना कंज्यूम करेंगे, जितना ग्रो करा उतना कंज्यूम करा एंड कोई सरप्लस नहीं बचा। कमर्शियल, कमर्शियल ऑब्वियसली मीन्स जिसको आप मार्केट में बेचने जाएंगे या जिससे आपको कुछ इनकम मिले या जिसके थ्रू आप कुछ अपने लिए जनरेट कर सकें, तो उसको हम कमर्शियल एग्रीकल्चर कहेंगे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो तरीके में डिवाइडेड है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पहले हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करते हैं एंड देन हम एक्सटेंसिव की तरफ मूव करेंगे। तो इंटेंसिव, इट इज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही पर्टिकुलरली क्यों बोलते हैं। फायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेट करता है। वाई फायर? क्योंकि इसका बेसिक तरीका क्या था, एक पैच को पहले बहुत प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से उसको एरिया को क्लियर करा गया एंड देन उस एरिया को प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से क्लियर करके उस एरिया को फायर कर दिया जाता था, वहां आग लगा दी जाती थी जिससे एशेस बचते थे सिर्फ। तो उस एशेस को हम छोड़ देते थे ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके। इसीलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। पहले स्लैश करा एंड देन उसको बर्न कर दिया, सो इट इज वेरी क्वाइट प्रिमिटिव एक्टिविटी, सो हम उसको बर्न कर देते थे। अब 2-3 साल के बाद जब वो पर्टिकुलर लैंड अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेगा, अ पर्सन कैन मूव टू दैट लैंड एंड कैन यूज दैट लैंड। सो एक लैंड को फायर करने के बाद दूसरे लैंड पर शिफ्ट हुए एंड अगर उसी लैंड ने फर्टिलिटी रीगेन कर ली है तो उस लैंड पर वापस शिफ्ट हो गए। दैट इज व्हाई वी आर टर्मिंग इट एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग क्योंकि एक पैच से दूसरे पैच पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड स्लैश एंड बर्न क्योंकि फायर हम यूज करते हैं उसके लिए। सो there is one disadvantage in this, that after some time soil loses its fertility. So this is a disadvantage of practicing such type of activities. And another thing is this particular activity, this was a very primitive type of agriculture, and in order to with fire, through which tools they slash the area, they were very primitive tools like sticks, hose। इनकी हेल्प से, बहुत ही primitive tools हुआ करते थे जिनकी हेल्प से वो एरिया को क्लियर करा करते थे। And this was
prevalent in Southeast Asian part. So these are the regions where this type of agriculture was there. So now we come to extensive. एक्सटेंसिव के दो पार्ट्स हैं. डोमिनेटेड बाय वेट पैडी एंड डोमिनेटेड बाय अदर देन वेट पैडी. तो एक्सटेंसिव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. एक तो जो पैडी क्रॉप, राइस क्रॉप जो डोमिनेट करती है जिसको, और अदर देन राइस क्रॉप जो ग्रो करते हैं वो हम एक्सटेंसिव में इंक्लूड करते हैं. तो हम पहले बात करेंगे वेट पैडी की. पहले ही बता दें, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मॉनसून एरियाज में, स्पेशली एशिया के मॉनसून एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट पैडी, so there is small land holdings are small because the population density is high, so small land holdings. Manure is used to add the fertility to the soil. Then family members work on the land. So like it is not required that we have to call other laborers this from this area or like that. Since the land holdings are small, so family members work upon the areas, and manual labor is required in case of paddy crops. So manual labor is important. हमने पहले ही बता दिया है कि लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती हैं, तो यील्ड पर हेक्टर तो हाई होता है बट पर पर्सन बहुत लो होता है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो पर पर्सन यील्ड बहुत लो होता है, जबकि पर हेक्टर फिर भी एनफ होता है. इन कंपैरिजन टू पर पर्सन, पर हेक्टर इज हाई. सो दिस वाज what that was dominated by wet paddy, especially rice crop. Wet paddy, when we say dominated by wet paddy, then it means rice crop. Now crops
other than wet paddy? It's not necessary that in whole of the monsoon Asia only wet paddy is grown. No, other crops like wheat, barley, millet, these type of crops are grown in areas, monsoon Asia areas, which are not dominated by wet paddy crops. So these are the things that are other than paddy crops. So the characteristics which we talk about for wet paddy crop and the characteristics which we will be talking about other than wet paddy crop, they are all almost similar except irrigation. That is irrigation. So irrigation is something different which is in crops which are not dominated by wet paddy. Other than that, almost all the characteristics match to the characteristics of crops that are dominated by wet paddy. So with this we completed subsistence agriculture, that is intensive and extensive. So with this we completed subsistence agriculture. See, these are the sub points, so don't confuse. The agriculture we had completed, only the part which is subsistence agriculture we had completed. Now we will come to another topic, that is plantation agriculture.